Hello students. So henceforth we are starting with demand and supply. We will study what is demand, what is law of demand, what are determinants of demand, and then we'll go to supply, what is meant by supply curve, what is law of supply, what are determinants of supply, what is market equilibrium, and so on and so forth. So let us start with demand. So demand refers to the various quantities of commodities which an individual is willing to buy, willing is important, able to buy at different prices. One minor correction is there, it is commodity, various quantities of an commodity. मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपको एक कमोडिटी दिखी, तो कमोडिटी दिखने के बाद सबसे पहले तो आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए उस कमोडिटी को परचेज़ करने की. इफ़ यू हैव विलिंगनेस, देन विलिंगनेस के बाद आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए. आपकी जो विलिंगनेस है वो हो सकती है, बट आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि आप चार्टर प्लेन ख़रीदें, बट डू यू हैव द इनफ मनी टू परचेज़ अ चार्टर प्लेन? यू मे नॉट. सो अगर आपकी विलिंगनेस है प्लस आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके जेब में पैसा भी होना चाहिए उसको ख़रीदने के लिए. फर्दर, the third point is, first is you are willing, second is you have ability, third one is you are willing to buy a particular commodity at a particular price only, not at all the prices. आप कई बार आपको लगेगा कि प्राइस बहुत महंगा है तो आप नहीं खरीदेंगे. So you need a particular price also. So there are three important things. First is willingness, second is ability, and third is the price. The price has to be a suitable price. Now let us study what is demand curve. In the demand curve, on the x-axis we have quantity demanded and on the y-axis we have the price. जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, like this, and it is denoted as D. अब मान लीजिए एक कमोडिटी है जिसका प्राइस 100 रुपीज़ पर केजी है और आप उस प्राइस पर 5 किलो उस क्वांटिटी के परचेज़ कर लेते हैं. Therefore on y-axis 100 rupees per kg and on x-axis we have 5 kg of that particular commodity which we are willing to purchase. अब मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि जो प्राइस है वो 100 से घटकर 90 हो जाता है. तो जब 90 प्राइस हो जाएगा 90 पर kg, then what will you do? You will try to buy more quantity. Now suppose that at 90 rupees price you are willing to buy 7 kg of that particular commodity, because it is a psychological tendency to buy more at a cheaper price. This we have studied in law of diminishing marginal utility. क्योंकि जो additional quantity हम purchase करेंगे, it will give me lesser satisfaction. That's why I am willing to pay lesser price for that. Because additional units will give me lesser satisfaction, that's why I am willing to pay lesser for additional quantities. आगे बढ़ने से पहले मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं. मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई. तो उन वेरिएबल्स के आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकती है और नेगेटिव रिलेशनशिप भी हो सकती है. पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, और जब वह x की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी. इसे कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन. और नेगेटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है, जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और जब x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और जब x की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी. चलिए अब सबसे पहले पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये x की रिलेशन है, ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है. नाउ सपोज x की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, एंड तो हमने कहा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनके बीच में, तो y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड सपोज नया पॉइंट यहाँ पर आ जाता है और y का यहाँ पर आ जाता है. तो अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, सो अर्लियर वी हैड पॉइंट A, नाउ वी हैव पॉइंट B, और A और B को जब मैं ज्वाइन करूँगा देन आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ अपवर्ड स्लोपिंग. तो ये अपवर्ड स्लोप है, A से B की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है. देयर इज़ एन अपवर्ड स्लोप.
चलिए इसी तरह हम नेगेटिव रिलेशनशिप को भी प्लॉट करके देखते हैं, तो क्या कर्व हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए इनिशियली एक्स यहाँ पर था और वाई यहाँ पर था, एंड पॉइंट ए इज समवेयर हेयर। अगर मैं एक्स और वाई को ज्वाइन करूँगा, दिस इज पॉइंट ए। नाउ लेट अस स्टडी दिस सिचुएशन, वन सिचुएशन। एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, तो नया पॉइंट क्या आएगा, एक्स का यहाँ पर आएगा और वाई का यहाँ पर आएगा। अगर मैं इन्हें प्लॉट करूँगा, सो दिस इज़ द न्यू पॉइंट बी, और मैं ए और बी को जब ज्वाइन करूँगा तो ये जो लाइन आई है, दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, सो दिस इज़ अ डाउनवर्ड कर्व. So whenever there is a negative relation among the variable, the curve will be downward, and when there is positive relation among the variable, the curve will be upward sloping or upwards. चलिए अब हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं. Here, what is the relationship between quantity demanded QD and the price? We can say that their relationship is negative and the curve is downward sloping. जब QD बढ़ रहा है तो प्राइस कम हो रहा है. और वी कैन से दैट व्हेन प्राइस इज मोर पीपल बाय लेस, एंड व्हेन प्राइस इज लेस देन पीपल बाय मोर. एंड दिस नेगेटिव रिलेशनशिप इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. देयरफॉर law of demand means quantity demanded QD of an commodity increases. It increases with fall in prices and vice versa, provided that other things being constant. This is very important. Other things being other situation, other conditions being constant. Previous example में जब प्राइस 100 से 90 हुआ तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी 5 to 7. बट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो सिचुएशन में जिससे चेंज आए. फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, उसके पास पैसे ही नहीं बचे अभी ख़रीदने के, तो 90 पे ज़रूरी नहीं है कि 90 पे अगर उसको 7 किलो मिल रहा था वो उस प्राइस पे उस क्वांटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा. देयरफॉर लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ एन कमोडिटी, provided that other things remain constant. Now let us study the determinants of demand. First determinant is the price, which we have already discussed. If the price decreases, then there is an increase in the quantity demanded. Second factor is the income of consumers. Income of consumer affects the quantity demanded. If the income increases, then the purchasing power of the people increases. Therefore, there is an increase in the demand. So let us understand this with the help of demand curve. Demand curve is the relationship between price and quantity demanded. So let us draw the demand curve. So we have studied that if income increases, then the quantity demanded also increases. So how can we reflect this in the demand curve? It is reflected by shifting of the demand curve rightwards. Suppose a person was purchasing 5 apples at 100 rupees, and because when the price decreased to 90, then he was buying the 7 apples. So this was the demand curve, downward sloping line. Now due to the increase in the income of the person, his purchasing power has increased. Now at 100 rupees he can purchase more quantity, suppose this quantity, and at 90 rupees also he can purchase more quantity. So what has happened now? Now there is a shift in the demand curve rightwards. At each price the person can buy more apples. At 100 the person now can buy suppose 6 apples, and at 90 now the person can buy say 10 apples. So we can say that increase in income leads to rightward shifting of the demand curve. Therefore there is a rightward shift in the demand curve. The third factor which affects the quantity demanded is the price of related commodities. There are 2 types of related commodities, substitutes and complementary. Example of substitutes are tea and coffee, or we can say Coke and Pepsi. Substitutes are the commodities which can take place of other commodities, which can be used in place of other commodities. Complementary goods are the goods which complete some other commodity. So complementary goods complete
or complement some other goods. Examples are, for example, diesel and diesel car, or we can say that fountain pen and ink, or for that matter left shoe and right shoe. Here price of one good impacts the demand of other goods. For example, if the price of diesel increases, then it negatively impacts the demand of diesel cars. Similarly, if the price of coffee will increase so much, then people may shift to the tea. Therefore, if price of coffee increases, then the demand of tea will increase, because coffee will become more expensive and now people will buy less coffee and they may shift to the tea. Let us draw the demand curve of tea. Now on x-axis we have the QD of tea, the quantity demanded of tea, and on the y-axis we have price of tea. And this D represents the demand curve. Now suppose if the price of coffee increases, then there will be increase in the demand of tea. There will be a rightward shift in the demand curve of tea. Let us see why is it so. Now suppose that at this price the person is buying this much quantity, and if the price of coffee increases, then at the same price the person will buy more tea. So there is a rightward shift. Similarly, all these points will shift right. At different price level, different quantity of tea was being demanded, and due to increase in the price of coffee, all these points will shift to the rightwards. The fourth factor which increases quantity demanded is the taste and preferences. Suppose there is a favorable change in the taste. Now people are liking the taste of a commodity, people are preferring that particular commodity, then it will lead to the increase in the demand of that particular commodity. Similarly, if the people start disliking a particular product, then its quantity will decrease. So this was all about the determinants of demand. Now another important thing to note is that there is an individual demand and there is something known as market demand. Individual demand is the demand of an individual, and market demand is the demand of a particular area, local area. Therefore, market demand is the summation of demands of all individuals in a given area. Another thing to note here is that the concept of market demand, it is a microeconomics concept, because it talks about the demand of one particular commodity. In macroeconomics, we use the term aggregate demand, which is the demand of all the goods in the economy, all the commodities in the economy. So this was all about the concept of demand. In the next lecture we will study the concept of supply.